And good evening, everybody. Welcome to Infinas Learning Solutions and welcome to the Python classes. I want to thank everybody that for joining a class on Saturday evening. Thank you, everybody, for that because it's a weekend and I know that many of you would want to relax, but thanks for joining the session. And I hope that you will enjoy the learnings that we are going to start today and the another 25 days that we are going to have. So I will just wait. People are joining in. People are continuously joining in. So there is a very good response for from all of you. Thank you for that as well. So just allow us a minute because people are joining. So let them join in, and then we start an introduction to what is Infinas and how are we going to go ahead with the upcoming sessions for the this course. Okay. I think we can start now, yeah? All right. All right. Uh, okay, guys. So let me share my screen. Let me take you through the content and what do we plan for you? What is the plan that we are having for you people? So let me just share my screen with you all, and then we are good to start. Okay. Let me know when you are able to see the screen. So if anybody can confirm, sir, is everybody able to see the screen? Yeah. Yeah. Okay. Thank you. So as you all know, that this is a Python programming class, and this is a course that we are going to conduct free for everybody from Infinas Learning Solutions. Okay, before I go ahead with the introduction to our trainer and the introduction to the course content that we are going to have it for this session, I would like to take few minutes to explain what are we, what is all about Infinas Learning Solutions. So I'm very excited to tell that Infinas Learning Solution is the world's leading training, consulting, staffing, and a placement company. So basically, we deal into all sorts of training, right from the graduates to the people who are about 50 years of age and they still want to learn. So we cater to all your training needs, right from classroom training to virtual trainings to online trainings and to any classes that you can think of. So we are into job oriented classes, we are into academics, and we are into professional classes. So all sort of training we cater to. Yeah, so that is one of our core services that we offer. Second one is the staffing and placement. So we have tie-ups with a few of the multinational companies, wherein we are the direct placement partners for them. So when they have openings or when they have huge requirements, they come to us and then we provide them the candidates suitable on their skills and the skill set that is required. So we do have our placement services as well. So you guys can be benefited for that as well. We have a tie-up with few of the multinational companies. Now, coming on to next important service that we are into. So we are into providing, we are into academics as well. So we have a tie-ups with world's and India's leading universities, wherein you can do your graduate courses, you can do your postgraduate courses. In case by any chance you are not unable to do a postgraduate which you always wanted to do, or you want to continue your graduation degree which by any reason you have missed it or you are unable to do that. So we have an
tie up with the management institutes and with the universities, wherein you can enroll yourself, and then you can get a full-time degree course. So this is not a part-time or something like that, but this is a proper full-time course, which has an equivalent degree as a full-time course will have. So we have that program as well. And not only that, once you complete that program, we provide assistance on placement also for that program. All right. So this is what are we into. And then we move on to our Python programming course. So if you are able to see this, so this is the content that we are going to do. Now, before I go ahead and let you people know what is all about Python and what are we going to cover, what is the model that we are going to follow and the structure that we are going to follow for next 25 days, I would just like to take an opportunity to introduce our trainer. So the trainer that we have, I'm very excited and glad to introduce our trainer, Chandra sir. So guys, he is having 20 plus years of an experience of training. So he is into totally training. So we have trainers who are into job plus they do the trainings. But then we have an opportunity that we have a trainer who has been the core profile or the core service for him is to provide trainings. So it's not someone who has just come out or who has just 3 4 years of experience. No, but then the sir which we have which who is taking the classes for all of us is trained into for 20 years and is into Python programming itself. So please take the advantage and please take the opportunity to take the best out of him. All right, and that too for free. So you're not going to pay anything for those 25 live classes that you're going to have. So the classes timing would be 6 to 7 p.m. every day, and the duration of the class is 25 days. And then what are we going to cover? What is a programming? So don't worry if you have not ever heard what is a programming. We are going to cover everything from scratch. So the candidates who think that I'm from a non-technical background or I do not understand any technical jargons, I do not understand any technical words, so please be assured that we are going to cover it everything from scratch. So we are going to start it with what is a programming language, what is Python, what is the features, how you're going to install Python and the Python IDE wherein you're going to write your programs. Now, basic programming, print, variable, input, escape, sequence, indentation. So these are the syntax that we are going to talk about. Then we have variable types, input, output, print, input type, conversions, operators, control structure, loops. Loops are very, very important for you to understand. And we all have, might have, at any point of time, you would have definitely heard about the for and the while loops, the famous so-called loops. We are going to learn about that in detail. We are going to uh, write programs using that, and then you will be surprised to see how simple it is. So there's no buzz around it, that don't get scared that it is something very rocket science. No, until and unless you try yourself, you attend the classes, you will know how simple it is. All right. And then we are going to work with strings, list, tuple, dictionary sets, user defined functions, date and time, file operations, and then connecting to a database. So it's very important that we understand how does a programming language communicates with the database. So that is what we are going to cover, and the basic project, which means a live project, how it works in real. So we are going to cover that as well. And now, coming to everybody to update that, guys, please be attentive because we have in between quizzes, and then you will be rewarded. You will be rewarded for the quizzes. Isn't it great that that when you are attentive and when you are asked questions, it's just not that we say, "Oh, well done." You're going to get gifts as well. So yeah, take this, grab this opportunity, be attentive, ask as many questions as you can. So there will be a chat box always enabled for the candidates to type in your questions, and we will be happy to answer them. All right. And at the end of the course, there will be a completion certificate, which will be provided to all the candidates who successfully completes the course of 25 days. Okay. All right.
is oops concepts missing in this? I'm also going to answer few of the questions that I'm looking into the chat. Oops concepts will be covered. Gajanan, yes, we are going to cover the oops Yeah. concepts as well. Yes. Yeah. Yeah. This is there. Yes, absolutely. All right. So with this, I would like to hand over to Chandra sir. Sir, all yours, and please go ahead. Good evening, everybody. Good evening, everybody. I think this screen did not be shared from your side now. I will be sharing my screen. Yes, Okay. I have stopped the sharing. You please Yeah. go Yeah. ahead. Yeah. Yeah. So first of all, I will like to, yeah, just a minute. I'm going to share one screen. Just a minute. Uh, oh, this is not your screen. I will be showing you my PowerPoint. This is not the screen for you. Actually, I'm trying to open this one. Yeah, this is for you. This is syllabus. This is another same. It is another copy, but it is not read only like that. So that was a PDF. So this is your syllabus. The oops is very much there. Connecting to database, set dictionary, everything is there. So that is a. I hope everybody can listen. Getting my voice properly. Yes, sir. We can hear you and Yeah, we yeah, can yeah, see the screen as well. yeah, yeah. Yes, we can. So before start, I would like to clear a few things. Number one, though I think that there might be some students who have some knowledge of programming, but I'm very sure that there will be a lot of people who has no idea of programming. Okay, so I will be starting from there that you don't know anything of the programming. So it will be start from the first lesson to your programming to we are doing fantastic thing in Python. And the most of the time we will be doing everything practically. It's not just a theory thing. Everything will be practical. Everything will be hands-on. Okay. So what is our agenda for today? Our agenda for today is about so we will be covering a lot of things. How do you run your Python and why the Python is so much popular? Why everyone should learn Python for career and for the other purpose. Okay, that will be our agenda for today. So before that, first of all, why not to start with something which which will amaze you? Okay, yes, just a minute. Uh, Can everybody see my screen? I have a tab of Google open. Can everybody can see it? Can everybody see my screen? Yeah, I think so. Yeah. So few things are. Look at my screen here. It's a code. It is uh, written in Anaconda. No, it is. I'm using Anaconda. We just count the number of lines I have written. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Not more than 10. And what it will do, you see, this is a site python.org from where you can download. Okay, Google News. I will cover it later. I will read news from that using Python. Okay. So this is the site Python. Okay. From here, you will be downloading Python, but I will showing you some more interesting sites there. So just see, this is a page here. This is a page here. A lot of things here. Okay. Let me do one thing before starting the theory and everything. So I have a code of like 10 line of code. Okay. I'm running it. First part, second part, it is running. Okay. It has given a lot of thing. Okay. Hello, sir. Yeah, hi. I think your screen is not visible. Only the student can see agenda.
Okay, okay. I'm just sharing it again, I think. I Okay. have, okay, new share. Okay. I think, yeah. Now, Yes, okay. visible. Yes, Yeah, it yes, is. visible. Jupiter Okay. scrapping, it is visible. Yes. Yeah, yeah, you can see. So this is the site here. Mm, I'm minimizing a lot of things. Okay. So this is a site here, and you can see. I will start from the beginning. Okay, just a minute. A lot of controls goes behind. Okay. Just a minute. Just a minute. All output clear. So I have that much of code. I have that much of code. 10 lines, not more than 10 lines. This is I'm running. First few lines, a lot of work has done. Okay. Let's move down. Run one more line here. Statement in programming language. Running some more line here. 3 or 4. And here you are. Mm, and the last line here. 2 more lines, 2 more statement. All the websites, all the links have been scrapped. Just see, few line of code. I have scrapped all the website, all the URLs from a page. Just 4 or 5 lines of code. Okay, not much. So this is the power. Yeah, somebody has raised the hand. Huh? Yeah. I'll take care. I'll take care of the Okay, no people who problem. are raising the Yeah, hands and asking yeah, question. yeah, I just request everybody to kindly type in your question and yeah, answer yeah, in the yeah, chat box, and I'll be yeah. happy to answer them. I have just mentioned Okay. that as well. So I am showing some power of the Python. yeah. Okay. I will showing some type of things every day, and in between the class, I will be showing a lot of things. Okay. This is just a beginning. Within few lines of code, I will just create a face recognition program. Okay. Few line. Okay. So this is what I was talking about. Just coming back. I'm just coming back to my agenda. So what is the power of Python? Is write less, do more. Okay, I'm starting from here. Write less, do more. If you want to write the simple hello world, uh, in C, you have to write that much. In Java, you have to create a whole class and write even more. Not only that, to run this program, you have to do a lot of what is called in Hindi, papad belna. Papad belna padega bahut sara aapko. You have to do a lot of things. You have to compile your program, and then you have to run this program. Okay. In Java, you have to you have to go to create its object, and then you have to just run it. And C also, you have to create the exe. If you are in a window, if you are in a Linux, you will have to doing a lot of things here. But in Python, let me show you just this one line of program. I'm writing something else. No? Print, yeah, just that much. The error is here. You have to put a quote here. And it is running. Run, run. Hello. Okay. No mumbo jumbo. No need of compiling. It's a high power scripting language. Very easy. You can be productive day one. Okay. So people who have a little bit of experience of using C, they have to use printf scanf. They go into this spaghetti of the printf scanf, have the problem. We will see how we can do this all things so easily here. So it is so easy. Syntax is very, very easy, and it's so powerful. You may have seen one example. Okay. So before that, what really programming is? What is programming? Okay. Can anyone answer in the chat? What is programming? Anyone?
Yes, guys, you can just type in What is programming? Just yes, whatever smallest. you can think. Yes, Yeah. yes. Yuvraj says set of Set, instructions. Very yeah, correct. set of Yes, sir. instruction. Instruction for what? Instructions for what? To whom? Okay. Programming is way of communication with machine. Okay. Instruction to perform task. Okay. Fine. Fine. The another point to write the program or to give the instruction, what should have beforehand? आपको instruction देना. I'm going bilingual. If you show this, otherwise I will go into English only. So this is another question. If you want bilingual, I will mix these things. Okay. So okay. So you are going to give instruction. Okay. Suppose I want to say calculate the area of a circle. I want to give instruction. Or if you, I want something more complex. I just want to give the instruction how to calculate, say, a discount where the very complex criteria is there. So what you need to have beforehand? What instruction you will be giving? So the programming. Now I'm coming to answer. Okay, not in a way it is written and given in books. I will write try to be very specific, practical oriented, and in general. Okay, sometime I will just not go for the technical words. So here, this is my recipe for programming. Algorithm, implementing the algorithm in a programming language, and here you have a program. ठीक है? क्या होता है? First, we need an algorithm. Algorithm means how to do things, how things will be done. Okay. So suppose you want to calculate, say, area of a circle. So algorithm is take radius and then do the calculation. What is the formula is? Pi into R, and then print it. This is a simple algorithm here. But for the complex task, your algorithm will be complicated. Just like a take example of say, uh, who remember quadratic equation, ax square plus bx plus c. There are two roots. So what is the algorithm here? So take a, b, c, then calculate determinants that determiner that is d, b square minus 4ac. Then check whether this d is greater than equal to or less than 0. On the basis of that, you will be taking the next step. If d is less than 0, then you will simply print, okay, roots are not real. If d is equal to 0, then so algorithm have conditions. Algorithms have input and the condition for the output. So program has three basic part: input, calculation, or say computing, and the output. And what algorithm is? Algorithm is steps to do a task. Okay. So I have algorithm. So I know how to calculate quadratic equation. I have to implement it into using a programming language. Whatever the programming language I want to use, C, Logo, whatever the language. Okay, C++, Java, Golang, of course, Python. Okay, and then whatever you have written is now a program. Okay, so this is what is the programming is all about. Programming is not mathematics really. Programming is about management and logic. So if you have not done any programming before, so you have Python, a very powerful and easy language where syntax is very, very easy. You can learn programming. In fact, the truth is here, and all over the world, the Python is now the first programming language. Now in India also. Now in India also, even CBSE has introduced Python in place of C++ few ago. But in US and America and all the European country, Python was there in their university in a school much, much before. Okay. So syntax is so easy. So even children can learn it. Okay. But yeah, they have the library. Python has so many library that you can do a lot of tasks in a very, very simple way, in a very simple syntax. On a very few line of code, you can do a lot of things. That is the power of Python. Okay. So next thing, what the type of language are there? For those who have not done any programming before, what is the type of language? So
high level language, assembly, machine level language, and last it is the hardware. So whatever language you have used to write your program, computer doesn't understand. Computer is what is a hardware, circuits. It will not understand ABC or anything. It will really not understand 0 and 1 also. Okay. It will what it will understand? It will understand that some circuit has some voltage or not. huh? It will understand only power. Power means not power means yeah, the electrical power. Okay. So it only understand that. So whatever the programming language you have used, it has to be converted into machine language. So if you are programming in Python or Java or C or any programming language, it will eventually, you have to convert into the machine level language and it will run. Okay. So what if you are writing the program directly in machine language, fine, no need of compilation, anything, but very, very difficult. And those were the days in 1940s when programming was done in the machine level language only. Okay, you have to give the all the instruction, you have to know uh, for addition there is a code 0111, or for the subtraction or something, a code would have been very, very long. Okay, assembly was a step above, but we are mainly concerned with the high level language. So how can we define a high level language? High level means nearer to user, low level means near to hardware. Low level is very, very powerful. Really, computer only understand this machine level. This is the low level language. High level language has to be converted into it. I give you a very specific, interesting definition of high level language. Whatever computer language has a name is high level language. Yeah, understand? Any programming language that have a name is high level language. Either somebody may have remember learned logo in a school, that is also high level language. Why? Because high level language have a syntax and semantics. Like the real technical definition of high level language is a language having syntax and semantics of a like natural language. Natural language means the English, Hindi, Marathi. Okay, so yeah, does anyone wants to say something? Yeah. Yes, if anybody has any questions, Ranjit, Jagruti, please type in the chat box and we will be happy to help you out. Yes, sir. Go ahead. Yeah, You can yeah. use the bilingual Hmm. language as well. Okay. People would like to understand in Hindi and English both, so you can make use of both the languages. Yeah, yeah. Uh-huh. So Vishal asked how to Yeah, install. I'm So we are coming to going to, yeah, everything. yeah, Yeah, yeah. We are going yeah, to come to everything. How to install Python, and then this is just the very, very beginning, yeah. Vishal. So don't worry. Because yeah, Yeah, we are going to answer your each and every questions, and we are going to tell you how to install Python. In fact, we are yeah, going to show you yeah. as well. Yeah. Oh, whatever query you have, you just type it. We will be covering everything. Okay, no problem at all. Everything will come. Okay. So, what is type of language we have to learn for C++, Python, or Java? Just I have told that all over the world, Python has becoming the first programming language. And I will say jokingly, but not very incorrect, Python will be your first and last programming language. If you are in the field, you will understand what the Python is used for. You have to see nothing else. In Python, you can do a simple turtle-like programming to even NASA use it Python, Google use it Python, Amazon use it Python. Every programming code and everything inside the Google is Python. In fact, Google has hired the person who created the Python. Gudawan Rusam was hired by Google. Okay, so everything you see, I will also say where the Python is being used. So just you have seen. I will answering your Subhas's question first, then I will be front you. So which programming language you should learn? There are 3, 4 criteria. First criteria, where the job is. Yeah, isn't it? You will like to learn where the job and career is. Python is the job and career. Number 2, which is easy to
understand. Python is the most easy to understand. What else you want? Isn't it? What else you want? Okay, so Python should be your first language. Okay, I will tell about that. Okay, so Python is a high level language, obviously. Inside high level language, there are other category there. So Python is not only high level, but is also interpreted. Okay, it's a interpreted language. Okay, high level interpreted language. You don't need to compile yourself. Internally, it is being done. You don't need to do anything else. Just I shown you the my screen. Okay, I just wrote hello something, and there was no need to go and compile it and then run it. In Java, you have to do Java C, and you have to create the bytecode, and after that, there is no need. It will directly run. Okay, though you can create the Python exe also if you are familiar with the word exe now. Okay, so next thing, so where before going to that, I will just go where the Python is being used. All the famous company from Instagram to so Red Hat, who creates the say Red Hat operating system, IBM, Mozilla, Yahoo, YouTube, everyone use Python. All the algorithm beside inside the YouTube is Python. Okay, Google, Quora site, if anyone know, is totally created in Python. Even the web application is creating using Python. NASA, rocket science. Okay, everywhere Python is used. The Finance Institute, Goldman Sachs, Glassdoor, JP Morgan, big names, PayPal, fintech companies. Okay, all the big companies here, Uber, Ola, Netflix, Google, Facebook, everyone is here. They all use Python. So where Python is used is for the artificial intelligence, machine learning, big data, web development. There are library for everything. So if one is interested in web development, so there are many framework like Django there to do the web development programming. Okay, network security. Must you will be very interesting fact I want to tell you that most of the today a lot of the hacking tools are really written in Python. They are really Python script. Okay, just I have shown you the way. Just done a few line of code. I have just opened a website and just scrapped the data. So I can do a lot of things using the Python scripts. So a lot of Python scripts are there. It is easily available. And so, and the network security Python is used, and for the networking and those things also Python is used to manage the network. Okay, so whatever the field of modern programming is there, whether it is scientific computing, whether it is financial computing, where is some other commercial type of computing, game, everywhere Python can be used. Python can be used for the game also. There is a big, say, library there called Pygame. Okay, so even you can create desktop application, you can create web application, you can. So whatever type of programming is there, it can be done. Whatever the area modern programming is there, सब जगह Python use होता है. ठीक है? So once you learn the Python, your avenue is open for the so many of the jobs, so many field here you can say स्पेशलाइज. जैसे ना डेटा साइंस में जा सकते हैं, जीयूआई डेवलपमेंट में, नेटवर्क सिक्योरिटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अगर आपने नाम सुना होगा तो आईओटी डिवाइसेस होती है, जैसे नोड एमसी होता है, उसके अंदर माइक्रो पाइथन इटसेल्फ बना होता है. ठीक है, बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, सब जगह पाइथन का यूज होता है. ठीक है, सो अब फीचर्स की बात, मैं फीचर में सारे के सारे जो है अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि क्या फीचर है. हम लोग सारी चीज देखेंगे. इट्स अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज. आपको कोई टाइप वगैरह डिफाइन नहीं करता, सब इंटरनली टाइप डिफाइन हो जाता है. मैं वो प्रॉपर्टी दिखाऊंगा. और ये मैंने एग्जांपल पहले ही दिखाया है कि पाइथन राइट लेस डू मोर लैंग्वेज है. सो अब मैं इंस्टॉलेशन की बात करूं कि हाउ यू कैन इंस्टॉल पाइथन. ओके, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट.
Chrome, inside Chrome. Yeah. So here you see, this is the site. From there you can download the Python. Okay, and how you are going to install it, how you are going to program. This is my this is the next topic that I'm going to cover. So this is python.org. Okay, you simply write in your Google download. You just simply write download Python, then you will reach this page. Okay, download. Here you will find all the version that is currently available. The latest one is 3.11, and before that is 3.10. Okay, in my computer I have deliberately installed 3.10. Okay, and you can download it for any operating system. In fact, if anybody has the familiarity with say Linux, Python वहाँ पर ऑलरेडी रहता है. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सी सी प्लस प्लस पाइथन जैसी चीज़ें पहले से रहती हैं. विंडो में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैक में भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो यहाँ पर सबके लिए वर्जन है, आप कहाँ से इंस्टॉल करना चाहते हैं. आई होप सभी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ना. ठीक है, कोई अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करता है तो उनको भी मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि उन्हें क्या करना है. ठीक है, ओके. सो देखिए यहाँ पर मेटा जो है, फेसबुक वाले जो है इसके स्पॉन्सर है ना. ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये 3.1011 जो आप पसंद करें. मेरा अपना सजेशन होता है कि सबसे टॉप वाले से एक नीचे लेना चाहिए, क्योंकि उसका कम्युनिटी में सपोर्ट ज़्यादा होता है. लोग उसके बग्स या कुछ हो उसके बारे में लोग ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, थोड़ा टेस्ट ज़्यादा हो चुका होता है उसका. सो आई हैव डाउनलोडेड दिस. आप इसको डाउनलोड करेंगे, हार्डली 30 MB के आसपास का डाउनलोड होगा. ठीक है, इज वेरी वेरी स्मॉल है ना, जीबी में डाउनलोड नहीं होगा, ओनली 30-40. मैं जितना देर में सेंटेंस बोलूंगा कि python.org.download में जाकर इतना डाउनलोड करो, बहुत लोगों का डाउनलोड भी हो जाएगा, दैट मच. ओके, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद उसका जो आएगा उसको आपको, मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं दिखा देता हूँ. कैन यू सी माई स्क्रीनशॉट ऑन माई पावर पॉइंट? देख सकते हैं मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? Yes, 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 या sir. तो देखिए, जब आप उसके डाउनलोड वाले जो एक जो प्रोग्राम आएंगे उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको आएगा, इंस्टॉल पाइथन 3.9 पॉइंट. मैंने 3.10.9 वाले को डाउनलोड किया था, 64 बिट वाले, है ना. आपको यहाँ पर आएगा इंस्टॉल नाउ, और एक आएगा कस्टमाइज इंस्टॉलेशन. ठीक है, आपकी मर्जी है. आप आप सिंपली इंस्टॉल नाउ कर दोगे तो आपको और कुछ नहीं पूछना है, सिंपली इंस्टॉल नाउ क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल हो जाएगा. कस्टमाइज सभी को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो विद इन, और मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ कि बिना इंस्टॉलेशन के भी आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. मैं वो भी टेक्निक अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ. तो पहले लेकिन जो इंस्टॉल करना चाहते हैं, नॉट मच, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यू विल बी एबल टू डू. ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, पहला तरीका. जब आप अब इंस्टॉल कर लिए, सो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. आप कहाँ पर कोड लिखेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर कहाँ आप कोड लिखेंगे. ओके, सो देयर आर फ्यू प्लेसेस देयर यू कैन राइट द कोड. बिना इंस्टॉलेशन के कैसे काम होगा उसकी मैं बाद में बात करूंगा. पहले एज्यूम कर लेता हूँ कि सबने इंस्टॉल कर लिया, एज्यूम कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इट विल गेट इंस्टॉल्ड. ठीक है, या how to program Python in Android. Okay, I will tell you. I will tell you how to program Python in Android. मैंने कहा ना कि बिना इंस्टॉलेशन के कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, पहले इसकी बात कर लें. ठीक है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर लेंगे. फिर जो दूसरा बात मैं कर रहा हूँ उसका आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ताकि आप किसका यूज करेंगे, है ना. सो जस्ट अ मिनट, लेट मी डू द whole screens there, whiteboard, iPhone.
desktop I just want. ठीक है, यहीं से कर लेता हूँ. एक मिनट. आप क्या करेंगे कि जब स्टार्ट करेंगे तो एक और प्रोग्राम आप इंस्टॉल कर लो. ठीक है, वो है पाइचार्म. ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए पाइचार्म को. लेकिन रिमेंबर वन थिंग, पहले आपने क्या करना है, पाइथन इंस्टॉल कर लेना. पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आप पाइचार्म इंस्टॉल करेंगे. अगर पाइचार्म इंस्टॉल नहीं कर रहे तो आपको क्या करना है कि पाइथन इंस्टॉल करने के बाद ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. इसको बोलते हैं आइडल. ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, आइडल मिल जाएगा. ठीक है, मैं एक ऐसे सिंपली मेरा ओपन हुआ तो एक प्रोग्राम खुला खुला मिल गया है. तो जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, यू गो टू योर कंप्यूटर, कोर्टेना अगर विंडो यूज कर रहे हैं, वहां पर जाकर आप लिखें IDLE आइडल. हाँ, आइडल लिखेंगे तो क्या होगा, आपको एक आईडी मिल जाएगा जो कि साथ में इंस्टॉल हो जाता है. ठीक है, कहाँ पर आप कोड कर सकते हैं, आइडल में कोड कर सकते हैं. लेकिन वी प्रिफर नॉट आइडल बट आईडी लाइक पाइचार्म. बिकॉज यहाँ पर क्या एडवांटेज है, यहाँ पर एडवांटेज क्या है, यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि आपको बहुत सारे कोड का कंप्लीशन मिल जाता है. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, आई थिंक सबको दिख रहा है, मेरा पाइचार्म दिख रहा है सबको. हेलो, मैं शो कर दे रहा हूँ कि पाइचार्म कहाँ से डाउनलोड करना है. ठीक है, हेलो. हेलो, आई एम बैक. हेलो, आई थिंक आई एम बैक. हाँ, हेलो.
Hello. Hello, can everyone hear me? Hello. Hello. Uh, Hello. Can everybody listen me now? Because the voice is not coming from your side. So I just want to be confirmed. Yes. Some people are saying Rohit Kulkarni to all panel. Yes, sir. We can listen. Okay. Thank you. There was some network issue. Okay. So we will be continuing from where we have last left. Okay. So what we are talking about, how to install it. Okay. How to install it. So just a minute. My sharing is there. So what I was talking about, that you can join it, download it from where? Okay, I can show all the windows there. I have a lot of things there. Okay, so you can download Python from python.org, download whatever version you want, and I will suggest go for one lower than the current one. Okay, because you don't need to do all the new stuff first. Okay, and next, if you like, you can uh, download PyCharm. Okay, you can PyCharm, download PyCharm ID, and I'm showing you all the tools which are free and open source. Okay, you don't need anything that is say paid, or you have to find out the crack or something. Okay, so just download it, and next you run it. Remember, the point is here, first you install Python, then you install PyCharm. Then the Python will automatically uh, find your installation, and you can write there your code there. Next, for those who just want to know, I just want to run Python on say mobile, or without installing, then just connect to your email. So I am logged here. No? I am logged here, and I will go to Google Colab. Okay. So what I have just colab.sh. Just you type Google Colab. Okay. Got everyone? What you have to type? Google Colab. Okay. Welcome to Colab or something. Go to File, New Notebook. Okay. Yeah. What I have tapped? First, you in your browser, preferably on Chrome, it runs better. Connect to your just join. You log into your Chrome, and then from there you just look for, just type Google Colab. Okay, this will open. I'm doing it again for everybody. Okay, I'm doing it again. Just type Google Colab. Okay, and welcome to Collaboratory. Example and everything. I'm just leaving it, and go File, New Notebook. It's just like a Anaconda notebook. I will talk about Anaconda also.
and you can write your program here. So anyone who is joining with the mobile, you can try it. Okay. Print. Hello. You have to type the string in quote, double or single. Huh? No problem. And to run, there are shortcut key also, but just click here. It will be little slow because it is running from the server. Okay. Yeah. Okay. You want one more? You just here, just type 2 plus 2. You don't need to write has include this, has include that, void main. There is no need for that. Okay. Just simply write your code. Oh, why not you write something better? A is equal to 10, B is equal to 20, C is equal to A plus B, and print the variable name without code. A plus B, then print C. Just run it here. Okay. इतना काम करने के लिए सी में कितना कोड लिखना पड़ता आप समझते हैं ना। पाई जावा में क्या करते हैं, आपको क्लास बनाना पड़ता है ना, क्लास सम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और ये वैल्यू अगर यूजर से लेना पड़ता तब तो और भी ज़्यादा काम था, आपको बफर रीडर और लंबा चौड़ा कहानी बनानी पड़ती, तब जाके आप इतना काम कर सकते थे। Isn't it? है ना। ठीक है। So yeah, that is you got how to run Python without installing anything. That you can do from your mobile phone also. Android, no problem. Android, you can run it from iPhone also because it's site. ठीक है, थोड़ा सा स्लो होगा। और इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत वास्ट एरिया ऑफ लाइब्रेरी जो होती है, डीप लर्निंग वगैरह की लाइब्रेरी जो होती है, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना मुश्किल होता है। ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि सारी कॉम्प्लिकेटेड लाइब्रेरी यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहती है। इसका पेड सर्विस भी होता है जहाँ पर हमें ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, ज़्यादा रैम मिलता है। ठीक है, तो इट्स ये क्लाउड कंप्यूटिंग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हाँ, ठीक है। ओके, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? पाइचाम में भी प्रोग्राम करना हमने बता दिया, गूगल कोलैब में भी हमने करना बता दिया। ठीक है, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? नो। सो अब हम जरा सा आते हैं कि पाइथन के कोड का एक जगह और मैं जहां पर करूंगा जो स्कैपिंग कर रहा था, ये मैंने यूज किया है एनाकोंडा। सो इट्स अ बिग थिंग। ये आप लोगों के लिए अभी नहीं है ना, ये उनको करना पड़ेगा जो मशीन लर्निंग सीखेंगे। ठीक है, उन्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ ह्यूज थिंग। ये करीबन 600-700 MB का डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, अराउंड 20 GB स्पेस लेगा। ठीक है, सो या इज इट क्लियर? सो ये आपके लिए नहीं है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रैपिंग वाला कोड इसमें लिखा था। ठीक है, सो इट इज फॉर द मशीन लर्निंग के लिए इसका यूज करते हैं, इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं ज्यादा। इवन कोलैब का भी यूज मशीन लर्निंग के लिए ज्यादा करते हैं। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज टू नो द निटी-गिटी ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के बारे में अब बात शुरू करते हैं। सो यहीं से शुरू कर लेता हूँ। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, यहीं पर कोड लिखूं? ठीक है, हेलो एवरीवन, फाइन? या, सो sound is not coming. It's okay. No, sir. Sound is coming. I think there would be someone who has a connection issues. So, guys, just a request. We are able to view and listen to sir properly. Just kindly recheck your connections. Yeah,
So my side, from my side is everything okay. That is what I want to be very sure about it. Okay. So अब जरा सा देखें कि पाइथन का फैसिलिटी क्या है. So आप कहीं भी लिखो, यहाँ प्रोग्राम करें, एनाकोंडा में करें, पाइचाम में करें, इट डजंट मैटर. मैं यहाँ पर करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो है आई थिंक ज़्यादा क्लियर दिख रहा है ना. ठीक है, तो यहीं पर काम करते हैं. यहाँ पर अलग अलग सारे कोड जो प्रीवियस वाले हैं वो भी आपके सामने में रहेंगे, है ना. सो दैट इज वाई आई एम जस्ट एडिंग, है ना. यहाँ पर कमेंट लिखना है तो टेक्स्ट वाला ऐड करते हैं, और कोड लिखना है तो कोड वाला ऐड करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कर दिया, तब यहाँ पर जो लिखोगे वो कोड नहीं होगा, है ना. सो प्रोग्राम या ऐड, जैसे मैं यहाँ पर कंटेंट लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, इंटरप्रेस कर दीजिए आप यहाँ से. हाँ, जो भी करना है कर लीजिए यहाँ पर. अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नया कोड लिखने जा रहा हूँ. ठीक है. सो हाउ टू गेट, चलो यहाँ वापस आ गया. अब जरा एडवांटेज देखें पाइथन का. छोटे छोटे कोड से शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिकल कोड से. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इन द प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट बी श्योर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या मिलता है, दैट इज द क्वेश्चन हियर, एंड इट इज टू एवरीबॉडी. व्हाट डज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या रहता है, बिफोर कमिंग नेक्स्ट टू इट. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या रहता है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, जावा, सी, किसी में कोई भी प्रोग्रामिंग क्या हो बताओ. सिंटेक्स होता है, लॉजिक होता है. ठीक है, और क्या होता है? लॉजिक तो किसी भी काम में होता है. एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम किसी काम का होता है. चाय बनाने का भी एल्गोरिदम होता है. ठीक है ना. लाइब्रेरी जो होती है, या स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है. यस, लाइब्रेरी होती है, स्ट्रिंग होता है. ठीक है, स्ट्रिंग इज वन ऑफ द डेटा टाइप. लूप्स होता है, वेरिएबल्स होता है, आइडेंटिफायर होता है. यस, फाइन फाइन फाइन. एक दो और ट्राई. कीवर्ड्स होते हैं, या ये हो जवाब. हाँ, ये शुरुआत यहाँ से करेंगे. कीवर्ड्स होता है, पैकेजेस, लाइब्रेरी. ओके, केस स्टेटमेंट. यस, या ठीक है. तो मैं जो सारी चीजें जो अभी लिस्टअपल पाइथन की बात कर रहे हैं, ये डेटा टाइप हो गया. उप्स प्रोग्रामिंग का पैराडाइम है. मॉडल्स इज अगेन अ लाइब्रेरी. ओके, चलो. So must have a little idea. I'm just arranging those things. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर वन क्या होता है? एक कैर सेट होता है, कैरेक्टर सेट. ए टू जेड कैपिटल स्मॉल और कुछ स्पेशल सिंबल, है ना. ए बी सी डी स्मॉल वाला, है ना. ए टू जेड होता है कैपिटल में, हाँ. स्मॉल में ए टू जेड होता है, कैर सेट बोलते हैं इसको, है ना. इसके बाद क्या होती है? कुछ स्पेशल सिंबल होती है ना. दिस आर स्पेशल सिंबल्स देयर. और सबका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है. जैसे कुछ लैंग्वेज में ये हैश जो होता है वो क्या होता है, उससे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, विजुअल बेसिक जैसे लैंग्वेज में. कुछ लैंग्वेज में ये हैश जो होता है कमेंट क्रिएट करता है. ठीक है. ये एंड जो है एक ऑपरेटर होता है, ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग फंक्शंस लिखते हैं, है ना. तो कैर सेट होता है, जिसको कैर सेट मतलब शॉर्ट में बोल रहा हूँ, कैरेक्टर सेट. ए टू जेड एंड द स्पेशल सिंबल, एंड ऑल द सिंबल हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग, है ना. जैसे ये प्लस है, माइनस है, तो ये क्या है? ऑपरेटर्स है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है. ठीक है. ये बिटवाइज, सॉरी, ये कुछ लैंग्वेज में बिटवाइज ऑपरेटर होता है, कुछ लैंग्वेज में ये जैसे मैं कैरेट लगाऊं, ये कुछ लैंग्वेज में ये पावर होता है ना. कुछ लैंग्वेजेस में या ज़्यादातर लैंग्वेज में ये मॉडल ऑपरेटर होता है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है? कैरसेट होता है. दूसरा क्या होता है? कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है. पाइथन हैज वेरी लिटिल कीवर्ड्स, हम लोग उसकी बात बाद में करेंगे नेक्स्ट डे. कैरसेट होता है, कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है. इसके अलावा डेटा टाइप्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, और लाइब्रेरी होता है. दैट मच इज प्रोवाइडेड बाय ऑल द लैंग्वेज. क्या होता है? आई रिपीट, कैरेक्टर सेट जिससे हम आइडेंटिफायर बनाएंगे या कोड लिखेंगे, है ना. कैरेक्टर सेट, ऑपरेटर, डेटा टाइप्स. ठीक है. और क्या मैं भूल गया? और मैं क्या भूल गया? लाइब्रेरीज, है ना. फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं. या somebody has done it very fine, very fine, very good. So
लैंग्वेज का पावर आता है लाइब्रेरी से, ठीक है। लैंग्वेज का पावर आता है लाइब्रेरी से। जिस लैंग्वेज में जितनी वास्ट लाइब्रेरी है वो लैंग्वेज उतना ही पावरफुल होगा। प्रोग्रामर डोंट नीड टू डू थिंग्स अगेन एंड अगेन, है ना। तो जब हम लोग फंक्शंस बनाएंगे तब ये लाइब्रेरी के बात समझ में आएगा, और वी विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज हियर। ओके। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े लाइब्रेरी मॉडल होते हैं अलग अलग काम करने के लिए, जैसे गेम बनाने के लिए से आपके पास पाई, पाई गेम है, साउंड के लिए पाई ऑडियो है, ठीक है। मशीन लर्निंग के लिए साइकिट लर्न है, पांडाज है, डीप लर्निंग के लिए केराज है, टेंसर फ्लो, देर आर लॉट ऑफ लाइब्रेरीज देयर। तो वो बड़े बड़े लाइब्रेरी हैं। कुछ छोटे छोटे लाइब्रेरी क्या होते हैं, जैसे मैथ के होते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे कैसे उस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। डेट एंड टाइम की लाइब्रेरी है, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी है ना। ओके, सो दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है। अब जब हम लोग शुरुआत करें, कीवर्ड्स रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे कीवर्ड सामने आते जाएंगे, आप उसको यूटिलाइज करते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंटेक्स जो है पाइथन का कैसा होता है। पाइथन का जो सिंटेक्स होता है, जैसे फंक्शंस वगैरह बनाते हैं वो इंडेंट में होते हैं। तो मैं एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ जो आगे मैं फिर बाद में बताऊंगा। जैसे अभी मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ डेफ सम, अभी इसको नहीं समझना, ये आगे की चीज है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो इसके अंदर का कोड होगा, देखिए यहां पर क्या हो गया, एक इंडेंटेशन बन गया। तो ये मैं फंक्शन अभी पूरा नहीं लिखूंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा, इसके आगे जो भी लिखना है ना, जो भी प्रोग्राम पार्ट लिखना है वो इंडेंटेशन से लिखा जाएगा, ठीक है। पास अभी नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं फंक्शन लिख नहीं रहा हूं, अभी मैं सिर्फ ये इंडेंटेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। विल टॉक अबाउट दैट, है ना? ठीक है। सो ये इंडेंटेशन वाला स्ट्रक्चर होता है। ब्लॉक्स किससे से शुरू होते हैं, इंडेंटेशन से ब्लॉक्स पहचाने जाते हैं कि कौन सा ब्लॉक है। अदर लैंग्वेज में क्या होता है, एक ब्लॉक बनाने के लिए क्या होता है, इस तरह से कोड, है ना, कोलोन, इस तरह की चीजें लगाई जाती है, जो कि पाइथन में नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया सिंटेक्स। दूसरा पार्ट है डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप जो है वो क्या है, डायनामिक डेटा टाइप है। डेटा टाइप पाइथन के कैसे हैं, डायनामिक है, ठीक है। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो, लेकिन अभी मैं 5 मिनट्स और लूंगा, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड अराउंड 6:10 और समथिंग, ओके, 5 मिनट्स और। तो डेटा टाइप जो होते हैं डायनामिक होते हैं। डायनामिक मीन्स जैसे अभी मैंने ए में 10 डाला है, ठीक है। ए में हमने डाल दिया 10, और क्या करें, चलो ये काम कर गया, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट इसके बाद मैं अनाकोंडा में कोड लिखूंगा, क्योंकि उस हालत में क्या होगा कि थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, है ना। और मैं यहाँ पर बड़ा शानदार चीज़ है, यहाँ पर सब कुछ जो है बहुत ही तुरंत एकदम इंट्यूशन में आप सोच सकते हैं। आगे देखेंगे कि सी वाले जावा वाले सोचते हैं कि ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता, वो सारे चीज़ पाइथन में, ठीक है। मैं एक कमांड लिख रहा हूँ टाइप, हाँ, टाइप में लिख रहा हूँ मैं ए, ठीक है। सो नाउ रन इट। ये बताएगा कि इसका टाइप क्या है, इंट है। नाउ आई एम चेंजिंग इट हियर, मैं इसको बना दे रहा हूँ 10.5। नहीं, यहाँ नहीं चेंज करता हूँ, नया कोड में लिखता हूँ, ये इक्वल टू 10 है। मैंने अभी क्या किया, एक नया वेरिएबल और बनाया है, हाँ, ए इज इक्वल टू 45 पॉइंट से 9 बना दिया, ठीक है। और रन कर लिया, फ्लोट बन गया, ठीक है। यानी कि वेरिएबल में जिस तरह का वैल्यू आप डालोगे वो क्या होगा, वही टाइप ले लेगा, है ना। हेलो, नाउ रन इट, और इसका टाइप चेक करते हैं, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार बोला जाता है कि स्ट्रांगली टाइप्ड एंड लूजली टाइप्ड, है ना। सी जावा जैसे लैंग्वेज है क्या, स्ट्रांगली टाइप्ड। वंस यू हैव क्रिएटेड अ टाइप, है ना, वेरिएबल हैज अ टाइप, चाहे वो यूजर डिफाइंड हो या सिस्टम डिफाइंड हो, ठीक है, वो आप उसको चेंज बहुत मुश्किल के कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल है। टाइप चेंज होता है ना, लेकिन बहुत बेसिक टाइप की चीजें चेंज होती है, पार्सिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला पाइथन का एक, और पहला नहीं, और भी पहले फीचर का एक और फीचर, कि इसके टाइप जो होते हैं डायनामिक होते हैं, ठीक है। सो आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं है। सो बिफोर एंडिंग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, है ना। जैसे बात कर रहे हैं कि एरिया निकालना है हमें, बहुत सारी चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जो जिन्होंने प्रोग्रामिंग किया होगा दूसरा लैंग्वेज, दे विल फाइंड इट कि
अरे ये तो ऐसा मेरे लैंग्वेज में नहीं होता था, मेरे लैंग्वेज मतलब जिसको आपने पहले सीखा था, हाँ ये तो यहाँ पर हो जाता है, बड़ा कमाल का हो जाता है, ठीक है। सो वी विल शोइंग इट, और अपार्ट फ्रॉम द वट एवर द प्रोग्रामिंग वी विल डूइंग इट, मैं आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, बहुत एडवांस टाइप की चीजें, जैसे मैं कोड लिखूंगा और एक वर्ड क्लाउड बन जाएगा 10 लाइन के कोड से, या समटाइम मैं कुछ ऐसी चीजें जो डायरेक्टली प्रोग्राम में मैं नहीं बता रहा हूँ, जस्ट टू सो यू द पावर ऑफ पाइथन, मैं कुछ चीजें और बीच में दिखाते रहूंगा, जैसे ठीक है। मशीन लर्निंग के भी कुछ कोड वगैरह दिखाऊंगा बीच में कि कैसे लिखा जाता है, या क्या काम होता है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, है ना, इन बिटवीन आवर क्लासेस, 4 5 क्लास के बाद कुछ और प्रोजेक्ट बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे। देयर इज वन क्यूए, इज देयर एनीवन, या सिंटैक्स, और हाँ ठीक है, सिंटैक्स की मैं बात किया, सिंटैक्स किसी ने अभी लास्ट कुछ पूछा है, ठीक है, मैं सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंटैक्स में क्या करते हैं, सिंटैक्स में क्या करते हैं, एनीवन, पानी रखते हैं, ठीक है ना, ये ना करते हैं, सिंटैक्स में क्या करते हैं, वी कीप वाटर, छत पर रखते हैं, नो, इजंट इट, कोई बताओ भाई, सिंटैक्स क्या होता है, पानी की टंकी, इजंट इट, नो, सो व्हाट द सिंटैक्स इज, सिंटैक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेटमेंट, सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेटमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं कि 5 हम a को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, प्रिंट कैसे लिखना है, ब्रैकेट लगा के लिखना है, स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखना है। तो ग्रामर रूल जो है ना, वो क्या हुआ, सिंटेक्स हो गया। कि जैसे हमें क्वेश्चन बनाना होता है इंग्लिश में या हिंदी में, तो हमारे पास एक सिंटेक्स है ना, कि WH वाले एडवर्ब से क्वेश्चन शुरू होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो क्या है उसका सिंटेक्स है ना, एक्सक्लामेशन वाला होगा तो इस तरह का शाइन लगाएंगे, तो क्या ग्रामेटिकल रूल जो है वो होता है सिंटेक्स। और उससे मिलता हुआ एक और वर्ड होता है सिंटेक्स के बाद, उसको बोलते हैं सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स, ठीक है। सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, जो मैंने हाई लेवल लैंग्वेज का डिफिनेशन में बताया था कि सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स शुड बी लाइक हाई लेवल लैंग्वेज। Semantics means meaning, syntax means structure, semantics means meaning। देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ, जस्ट वेट, आइडल मेरा ओपन हो गया था, सो आई हैव लॉट ऑफ कोड हियर, ठीक है। जैसे इसी कोड को अब आप देख लो, इस कोड को, कैन यू एवरीवन सी स्मॉल कोड हियर, इनपुट इंटीरियर, क्या आप देख सकते हैं, दिख रहा है, नहीं सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, ठीक है नहीं मैं, सर, नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है मैं दिखाता हूँ, लगता है मुझे ये फिर से शेयर करना होगा, मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ओके जस्ट अ मिनट, न्यू शेयर, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स ओपन, या यू कैन शेयर दैट। ये वाला नहीं, एक और है, लॉट ऑफ, मुझे आइडल में शेयर करना था, नहीं होगा तो मैं उस कोड को मैं फिर से लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल ना, जस्ट अ मिनट, पाइथन, ठीक है, मैं इधर टाइप कर, इसको मैं वापस अपने कोलैब में ही टाइप कर देता हूँ, ठीक है। Just a minute, I'm just pasting something. देखो यहाँ पर एक कोड है, फिजिक्स इजकल टू फ्लोट इनपुट इंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, इंटर द मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, इंटर द मार्क्स ऑफ मैथ, इनपुट टोटल इजकल टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, सबको दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है ना, हेलो, यस यस हाँ सर, हाँ, अभी फिजिक्स दिख रहा प्लस है। केमिस्ट्री प्लस मैथ इजकल टू टोटल, यस। ठीक है। प्रिंट टोटल मार्क्स इजकल टू परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, प्रिंट इक्वल टू पास, एल्स प्रिंट इक्वल टू फेल। कोई अभी तो आपको ओपन करके रखा हुआ है तो आप बोलोगे कि ये तो पाइथन में लिखा हुआ है, अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती तो क्या बोलता वो,
बोलता है इंग्लिश में लिखा हुआ है, डजंट इट? इसका मीनिंग वही है जो इंग्लिश में मीनिंग है, इसका स्ट्रक्चर वही है जो इंग्लिश में है, तो इसका सिंटेक्स इंग्लिश जैसा है, और हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग भी इंग्लिश जैसा है ना? कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ इक्वल टू टोटल, दैट इज व्हाट वी से इन बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, है ना? ठीक है। इफ का क्या मतलब होता है? अगर, अगर परसेंटेज 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है तो पास लिखना है, नहीं तो एल्स का मतलब क्या होता है? नहीं तो, नहीं तो फेल लिखना है। ठीक है। सो इंग्लिश में भी उसका वही मीनिंग है, अब पाइथन में भी उसका वही मीनिंग है, isn't it? So this is what is syntax and semantics, like like natural languages. Is it clear to everybody? कोई जिफ या कुछ क्लैप लैप नहीं कर सकता यहाँ? हाँ? Okay, so that is the thing, syntax and semantics. So we will be concluding with that. Tomorrow we will, the next class we will be doing more interesting programming. Okay, and be sure that if you have not done anything programming before, you will learn programming in this 25 days. You will be writing fairly that much of programming that CBSE student can write in a one whole year. Okay, ठीक है? आपको सिर्फ क्या होना है? कंसिस्टेंट होना है, डोंट मिस एनीथिंग इन बिटवीन, क्योंकि सभी चीजें जो होती है एक से रिलेटेड होती है ना? तो कुछ रिकॉर्डिंग रहेगी प्रीवियस थिंग्स का, लेकिन आप रहेंगे तो यू कैन रेज योर क्वेश्चन। ओके, Yes. Yes. So Yuvraj says, sir, please repeat if and else function. So before we wrap up the class, sir, can you kindly repeat if else function one more time? हाँ, आई एम रिपीटिंग। Yeah, thank you. If I'm saying, just listen carefully. If you don't understand, if you understand, sit properly, else do whatever you like. So in English, what does it mean? What it mean? इट इज द सेम थिंग। इफ में क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन देते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, है ना? आगे का कोर्स में आप देख रहे हो कि आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर है, तो वहां पर इफ एल्स ये सारी चीजें करेंगे। मैं यहाँ पर ये एग्जांपल सिर्फ ये दिखाने के लिए किया था कि सिंटेक्स और सेमेंटिक्स क्या होता है ना? इफ का इंग्लिश में वही मीनिंग है जो पाइथन में वही मीनिंग है ना? दैट इज द थिंग। सो आई एम नॉट टीचिंग इफ एंड एल्स राइट नाउ, ये हम लोग बहुत डिटेल में आगे करेंगे। अभी सिर्फ क्या, किस चीज पर मैं पॉइंट दे रहा था कि द सिंटेक्स और सिमेंटिक्स क्या होता है ना, हाई लैंग्वेज क्या होती है। इज इट क्लियर नाउ? इसमें हमने कंडीशन लिखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, एल्स में अगर कंडीशन फेल है तो क्या करना है, दैट इज द थिंग, है ना? यहाँ पर क्या होता है, बाइनरी होती है, ट्रू है तो कुछ करना है, फॉल्स है तो कुछ करना है, ये इसके लिए इफ एल्स होता है। वी विल बी डूइंग इट इन अ मच मोर डिटेल, इन अ होल, पूरा एक दिन हम लोग इस पर काम करेंगे इफ एल्स के ऊपर, है ना? कंट्रोल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? Yes, sir. I think it should be clear now. And anyways, this is just the basic. हम if else के बहुत examples आगे देखने वाले हैं. हाँ, पूरा एक चैप्टर करेंगे उसके ऊपर। Exactly. So yes, everybody. So thank you for joining the class. And somebody asked me after the job, will you help us in job placement? Yes, we will help you in assisting to get you a job. We will help you with the job support. Yes. And guys, recordings will be available. We are going to send you the link. हम link भेजेंगे WhatsApp group पे, please check करिए। और YouTube में सारी recordings available है, तो आपको जाके वहाँ पे subscribe करना है, so that you, when a recording is uploaded, you get a notification. तो आपकी recordings miss नहीं होगी। और next class से पहले we would request you, suggest you कि आप recordings एक बार सुन लीजिए, so that you come prepared for the next class. It's a suggestion from our side that just go and read the recordings, come up with questions, and then we can start. Yes, we are going to share the YouTube link on the WhatsApp, and do subscribe that YouTube link, so that you get, we don't have to drop a message always. You get a notification whenever a new YouTube link has been posted. Yeah. Yes. Yes, thank you. Shubhansh says, thank you, ma'am, and thank you, sir. Yes, thank you as well for joining the class. So yes, so we wish you a good weekend. Have a nice rest of the day, guys. Thank you, everybody. We are ending the class. Yeah. Yeah, thank you, sir. Bye bye. Thank you, everybody, for joining. Okay.